एक ऐसी एक्सेसरी जो इंस्टेंटली एलिवेट्स योर लुक So glasses can really like change या again of how you're looking. फॉर बीइंग versatile in terms of your fashion and you know what can you do for a timeless wardrobe? Classics. I think you would have heard this line a lot of times. Build your classic wardrobe. Like कैसे अप्रोच करते हो फैशन सेंस को लोगों के या खुद के? कि sometimes you're not exactly what you are, but you want to represent yourself something else. स्वागत है आप सभी का आज के हमारे पॉडकास्ट में। आज की हमारी गेस्ट है अदिति भाटिया, जो कि मेरी पर्सनल स्टाइलिस्ट भी थी पहले। आज मतलब जो अभी मैं अपनी पॉडकास्ट की जर्नी के अंदर हम जितना काम कर रहे हैं, तो उसमें स्टाइलिंग एक मेजर पार्ट होता है। सो उसमें मेरी जो हेल्प की है वो अदिति ने की है। और साथ में हमारे हैं अंशिमा। अंशिमा हमारी ऑफिस में कंटेंट लीड करती हैं। सो अदिति से हम टिप्स लेंगे आज कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो या आप एज अ पर्सन, मेल और फीमेल, और रिगार्डलेस ऑफ योर जॉब, आप कैसे अपने आप को अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं, क्या ब्लंडर्स आपको नहीं करनी है, टिप्स फॉर शॉपिंग, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वार्डरोब की क्लटरिंग और डी क्लटरिंग आपको कैसे करनी है, वार्डरोब मैनेज कैसे करना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके पास है क्या, तो आप अच्छा कैसे पहनेंगे। दूसरा, गोइंग थ्रू अ वेरी कंसर्निंग टॉपिक इन द सोसाइटी अबाउट बॉल्ड मैन, कि अगर आप बॉल्ड है या सेमी बॉल्ड है, सो आपके लिए क्या पर्टिकुलर स्टाइलिंग टिप्स हो सकती हैं, आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है अपने आप को बेटर स्टाइल करने के लिए। हमने बात की अदिति से इन सारे टॉपिक्स के बारे में, एंड वी होप कि आपको आज का एपिसोड हमारा पसंद आएगा और वह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपकी आगे की स्टाइलिंग जर्नी के लिए। अगर आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच। So hi Aditi, how are you? I'm good. How are you? Great. How Anjima, how are you? I'm good. I'm good. सो अदिति, आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम स्वागत करते हैं आपका। तो आज का जो पॉडकास्ट हम रखेंगे उसको दो नैरेटिव्स में हम लेंगे। एक नैरेटिव होगा यू बीइंग ए स्टाइलिस्ट, एंड ऑब्वियसली अंशिमा हमारे साथ ही काम करती है। और अंशिमा का नैरेटिव होगा व्हाट डज शी सी इन कॉर्पोरेट लाइफ के लोगों का स्टाइल स्टेटमेंट कैसा हो रहा है और कितना इवॉल्व हुआ है लास्ट 5 से 6 सालों में। हम इसके अराउंड बातें करेंगे आज, है ना। सो पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये कि व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू बीइंग अ स्टाइलिस्ट, टू बिकम अ स्टाइलिस्ट, एंड हाउ डिड योर जर्नी बिगिन? If I share the honest journey with you, I have never been a fashion girl. ओके। And I give this credit to my brother. Like, he's always been, you should try this, you should try that. And he made me get into fashion communication course. And that's when, like a typical college student does, they try 10 different things, they'll end up into one. And like I said, I've never been a fashion girl. Okay. But I've always carried certain things to get that attention. And as in when I grew, I understood it's not that attention that I'm seeking, it's the confidence. Yes. Like every girl around me or every professor, I've looked up to them because I liked how, they were carrying themselves. And that's what I did. I basically pursued how people are feeling good about themselves and now help others do that. सो बेसिकली आप अ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं कर रही हैं कि लोग दिखेंगे कैसे, यू आर मेकिंग पीपल फील कॉन्फिडेंट, Yes. राइट? दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, राइट? यस, ऑलराइट, गुड। एंड अजिमा, हाउ अबाउट यू? आप कैसे अप्रोच करते हो फैशन सेंस को लोगों के या खुद के? Fashion. Actually, I belong with the creative field, so मुझे लगता है कि sometimes you're not exactly what you are, but you want to represent yourself something else.
So that is also a fashion when people are not able to like dig in your personality. Like maybe you can be a writer or something, director, but you wear like a stylist or something like actor or actress. So I see fashion in this statement. Right. And you just said that your brother was the factor that, you are into this line of career. So how did he inspire you? What did he say to you? कैसा रहा वो सब? उन्होंने कैसे आपको आगे बढ़ने के लिए इस मतलब लाइन में? So how will he motivated you? So I have always under the table, kind of judged or like helped my dad or my mom or him look better or carry themselves better. And he said that, you really resonate with uh, telling us how to present ourselves better. Not that people are going to judge you with the brand you're wearing, but just be like the better version of yourself, basically. And that's when I was like, okay, let me study through this. Let me understand what are the different levels. Why does a corporate person dresses up in a way that they do? Why is someone in a different field dressing up in a certain way? How is it that my mom is wearing Indian while my dad is wearing Western? So I used to basically dig into every single thing happening in my day-to-day life that, landed in a way that I explored working with different people, like being a homemaker or a creative person or a corporate girl, anybody and everybody. Right. Wonderful. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच होता है हर स्टाइलिस्ट का, है ना? दे मस्ट बी पीपल जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं या दे आर नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्फ. सो हाउ डू यू अप्रोच देम इन मेकिंग देयर स्टाइल स्टेटमेंट बेटर, राइट? कि मतलब जैसे मैं भी आपके पास आया था, सो आई वाज वेरी काइंड ऑफ कूल. मतलब मेरा वाइब वैसा ही है कि मैंने आपको जैसे बताया कि कैजुअल रहना है, और Right. इन द फील्ड ऑफ वर्क दैट आई एम, राइट? सो वो पूरा ट्रांसफॉर्म होना होता है आपको एक तरीके से. सो how do you take it further with every client that kind of client and in confident or underconfident client that you meet? I think this comes to the fact that with all my male clients, the agenda is just to look better, but there's a lot of emotional story behind a woman who is approaching you. So I'm not going to give it a gender stereotypical statement, but I have received a lot of different emotional line behind someone approaching me. Like I know a homemaker who wanted to get that respect. It's not like she's doing something which is not worth getting, attention for. And then I've also received queries from women who are working really well, but they feel like they want to be the example for their one child, right? So I always feel like women have that emotional statement attached to, what they are doing with what they want to do. But with men, it's pretty generic. I'm not, no judgments there. But it's something that I have noticed that women tend to get that emotional ache that, I want to be this if I'm getting something like this. So there, you are saying कि जब आपका विमेन क्लाइंट कोई भी होती है, सो उनका बेस मेजर जो एजेंडा होता है, इट्स टू मतलब वो उनकी स्टाइल स्टेटमेंट, उनका इमोशनल कनेक्ट होता है कुछ. Yes, अच्छा. exactly. और ऐसा मतलब अगर आपका पर्सपेक्टिव लूँ तो उसके ऊपर आपने अभी बताया भी हमें, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर पाएंगे आप? Absolutely. So, if I can refer to a specific one, I had this client from Bombay. She had a 4-year-old girl child, right? And she was a psychiatrist. And she said that, Aditi, it's not like I'm not confident. I'm okay with how I look. But I want to make sure that I inspire my child to, look up to me as she grows, which I think is something that gives her confidence. She's like, I want to be the example. It's not like I want her to earn the money I am earning, but she must be comfortable to, reach out to me. Right. If when she grows up, she needs to share something with me. And I should be that go to person for her, which is really, really inspiring, I think. That's true. That's inspiring, yes. How do you feel about it, Anshima? Have a personal story related to this. Like when I started my like content or creative journey, I worked with the media organization. So after 2 years working with them,
So I got a team of 8 interns. So now in that period, because I'm not that tall, I'm doing the pat, and also I usually wear like very casual things. So I used to like started wearing kurtas, and put a bindi, so that it will give you an editorial and publishing wala look to my personality, so that intern will like, "Ki, हाँ भाई ये editor है, नहीं she is acting your copies." So they will not वो मुझे ऐसे हल्के मना ले. So I was starting doing that thing in my routine. I had that thing. But फिर later on just आप जैसे grow करते हो, then you'll understand कि yeah, there are other aspects also, but this is also that एक approach करने का जो आपके कंसाइन से तरीका होता है कि अगर मैं शायद ऐसा करूँगी तो मे बी थोड़ा सा टेंशन और थोड़ा सा जो वैल्यू ऐड होती है वो हो जाएगी. Actually, I would like to add something to that. Whenever we sign up for a client or anything, we always tell them, do not dress for the role you have, or dress for the role you want. Wow. So you might be just an intern, but you want to get promoted to becoming an employee. Or if you're an employee, you want to get promoted to a higher position. Yes. So dress for the role you want, not the one you have. Wow. So I'm glad to have heard the real life example today. That's meaningful, yeah. और दूसरा अभी कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे हम कि जो हम पहनते हैं उससे हम कॉन्फिडेंट लगने चाहिए, है ना. सो कॉन्फिडेंस और ब्रांड्स आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोरिलेशन चल रहा है कि पीपल फील कॉन्फिडेंट while wearing expensive brands. Is it a fact? I don't agree with it at all. Like, I have seen women who are wearing 500, 600 items from everyday apps, fashion apps, but they are carrying it so well. Right. So, brand is never going to identify you or like categorize you as a stylish or a put together person. And I would always say stylish is not the agenda. The agenda is for you to look and feel better. Right. That's it. So brand is still, I think, a secondary or just, let's say, an excuse for people to just make their way out of it. So yeah, I don't agree that brands. तो पैसे खराब ही कर रहे हैं साहब. No. I'm not going to, any sideline anybody, but just don't make it an excuse that I can't afford a brand, so I can't be better. Right. That's the only excuse. मतलब अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो वो अच्छा दिख सकता है. 100%. You invest in limited clothes, timeless pieces, and not run after what a certain influencer is wearing or certain stylist is recommending. Run with your gut. Is it something you will sit, eat, and sleep in? If you can, go ahead and buy it. But if you can't sit and eat in it, there's no point. Wow. I'll take it as a narrative in my buying journey for future as well, I think. Alright. So, एक और perspective है. Since you have been styling people for quite a lot of time now, what are the common mistakes that you think that people make with fashion? In particular, आप उसके अंदर सब पे एग्जाम्पल ले लो. Be it corporate one, corporate में being a team lead, a manager, a VP, a director, a CEO, right? Or being someone who is a freelancer and wants to get more clients. So जब वो meetings भी हो रही होती हैं तो there must be some mistakes that people might have been making, right? So वो क्या क्या है मतलब जो आपने notice किया होगा? I think I will categorize this in two parts. One, body. So they don't have an understanding of what their body is. They keep judging it, but they don't build an understanding. And the second is, एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है और दूसरा आप उसी पे एक्सपेरिमेंट कर दो. सो इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वुमन और अ कॉर्पोरेट गर्ल who is conscious of her bust. So what she does is that she experiments with her tops. She will wear balloon sleeves, she will wear rounder neck to hide it. But that's not the point. You have to de-emphasize it. आप अपने bottoms के साथ खेलो. आप उसमें width add करो, V-necks पहनो, balloon sleeve की जगह regular sleeves पहनो. That is going to camouflage it. So instead of understanding, people tend focusing on that. They tend to focus on it. तो उससे सारा narrative ही change हो जाता है. आप बिल्कुल opposite कर रहे हो जो आपको करना चाहिए. And that's where you lose the game. Okay. And what do you think? आपका आप
आप सबसे वर्स्ट फैशन स्टेटमेंट क्या देखते हो कॉर्पोरेट में? मैं खुद ही आई थिंक सबसे मोस्ट व्हाट आई लुक फॉर दिस मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो ये है लाइक जब हेयर गर्ल तो वो उनका थोड़ा सा बॉडी टाइप आई थिंक वही है इट्स नॉट रियलाइजिंग और व्हाट योर बॉडी टाइप एंड नॉट एनालाइजिंग इट ऑन द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड सो तो उनको शायद वो बहुत ज्यादा और बलून सीज पहन लेते हैं तो मुझे वो एक वो जो सर्कुलर सा जो बॉडी दिखता है वो मुझे थोड़ा सा ऐसे आई कैचिंग ज्यादा लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको थोड़ा सा फैशन और to like have some stylist or learn something to like how to cut that flesh from that side area कि ये वो ऐसे क्या पहने हैं सो दैट इतना आई कैचिंग ना लगे तो मुझे बस वो एक शायद लोगों में दिख जाता है कभी कभी इन मेट्रोज ऑल्सो और मुझे लगता है कि फैशन इज वेरी बहुत ही एक पर्सनल चॉइस है तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि यू लाइक समथिंग अब आपको नहीं अच्छा लग रहा है आपकी बॉडी को बट यू लाइक आप उससे इतना इमोशनली अटैच्ड हो कि नहीं मुझे तो ऐसे कैजुअल शर्ट्स पहनना पसंद है कैजुअल टी शर्ट्स पहनना पसंद है क्योंकि आपका वो आप सिंपल बन गया आप बचपन से वही पहन रहे हो ये कैटेगरी है। तो वो उसको निगेट आप शायद नहीं करना चाहते और समझना नहीं चाहते क्या है आप यू जस्ट कंटिन्यू आर डूइंग दिस आप वही पहन रहे हो पहने जा रहे हो पहने जा रहे हो तो मुझे लगता है कि वो भी है कि हमें थोड़ा सा जो क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत है पर्सनालिटी वाइज अगर फैशन में जाएं तो। That's true. But don't- you know, I have seen the category of when you say chubby girl or curvy girl, I've seen them as an inspiration. I'll be very honest with you. Like if I take an example of someone we follow, Style Me Up with Sakshi Sanwani, she has been screaming the idea of accepting your body, Right. right? So in fact, she navigates through the idea, why not accentuate your curves, right? So अगर आप puff sleeves भी पहन रहे हो, balance it with something else, right? So and when you talk about comfort, I think the idea is to get out of it. Right. She got out of the comfort of judging her body and wearing anything that she can. And you come, I am the cover of a magazine. I am the red carpet girl, right? So I think she's proven that coming out of your comfort zone and rather accentuating what you have is the way to slay it. Okay. एक और क्वेश्चन है मेरा, हाउ इम्पोर्टेंट इज द प्लेस वेयर यू वांट टू वेयर समथिंग? सो वो जगह के हिसाब से कपड़े पहनने वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाउ अप्रोप्रिएट इट शुड बी और इट इज, राइट? आई गिव यू एन एग्जांपल. आई belong to a rural area kind of, right? So Jhajjar is not a very developed district yet. So I bought these harem pants, right? And अब मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ तो harem pants are pretty much common. Right. I'm so sorry. So हिमाचल के अंदर ट्रैकिंग के ऊपर lot of people you will find wearing harem pants and kind of stuff like that. सो मैं कोविड का टाइम था और मैंने वो पहन के मैं तो सुबह सुबह वॉक पे चला गया. यू वॉन्ट बिलीव कि एवरी सिंगल पर्सन, मैन और वुमेन, उन्होंने मेरे को जो लुक्स दिए ना, आई वॉज नॉट एबल टू वेयर इट एवर इन झज्जर. नेवर. और वो इतने, एक हेरम पैंट्स होते हैं जो थोड़े से सिर्फ चौड़े होता है, एक होता है जो बिल्कुल नीचे तक लटके रहे होते हैं, है ना? सो आई वॉज वेयरिंग वो चौड़े वाले. दूसरे वाले जो मैंने लिए थे वो तो मेरी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई. So how does it make sense? I think as much as you are open to the idea of I will wear what I will wear, one, you should have the confidence to carry it. It's not like you'll stop carrying it. Maybe you realize ki if I wear it for a morning walk, it's a little odd. No judgments, but Right. for them it was something new. Correct. Right. So when you talk about resonating with the idea of where you are going, correct. But वहाँ पे आपको कोई role of conduct नहीं. Right. If you're going for an interview or if you're walking to, talk to an editor in chief, anybody basically, dress for what you want to be perceived as.
right? If you sit in this podcast and you're wearing, like, let's say, something you might wear in Goa, yeah, something is going to fun, be fun, which will happen. Right. So it's about how you want to portray yourself. Correct. In that moment, it was something you're comfortable in. You judge me, okay. So you might not repeat it because you got a lot of eyes, but I think there's nothing like you have to wear something in a certain place. And how important is the role of the quote that we hear all the time, that first impression is the last impression. So how your style statement or your fashion statement or what you wear and how you carry yourself makes sense to it as well. I'm a big time believer of first impression. I'm a big time believer. I'm not going to deny. The first 7 to 10 seconds are going to make or break it, right? I've been in an interview with, like, sitting or sharing that room with 60 other girls. And when Jessie entered, I was like, shit, I have done this wrong. I have definitely overdone it. I might have, taken 30 minutes to figure out my hairstyle and everything. But I realized it was really simple. I would have just looked basic, groomed, put together. That's the 3 word I aim at. If you're groomed well, if your hair is combed, your face is, clean and tight, you don't look like you've just gotten out of bed, you are halfway there. Okay. And I think that's the way to go about it. It's not like pressurizing yourself. Oh my God, it's my first day. No. Just understand, okay, you look put together. Great. Good to go. That is it. And how about you, Anshima? How do you take the first impression of anyone? I think I check the gray matter they have in their head. So I don't go with the clothes and fashion sense, but yeah, definitely it like put some impact or on the other person head or like Alright. ways to think about like how this personality can be. They have guesses. Like they start guessing like what this person may be dumb or I don't think so it is the good thing to say, but there are people, there are dumb people out there. So it's I think people start guessing कि ये इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ये कैसा होगा, ये कैसा सोचता होगा, वही ओपिनियंस क्या होंगे. तो वो जज आप मतलब जज ही होता है शायद पहले. Yeah, It's also purposely all of us judge. I think I don't judge, but I observe people. So like from head to toe, I just see and मैं सोच लेती हूँ भाई ये ऐसा है. ठीक है, अब आपको उनसे इस्तेमाल ढूंढ लेता है. सिंस मैं आप सबको बता दूं, अंशिमा इज अ कंटेंट राइटर विद अस, राइट? शी इज लीडिंग a team of 3 or 4 people now, and one is on the way. And Aditi is obviously styling me from last 1 month, I guess. Yeah. From last 1 month. And तो अभी जो फर्स्ट इम्प्रेशन की बात हुई, तो आप दोनों अपना अपना टेक बता दो कि जब आपने मेरे को पहली बार देखा था तो आपको क्या इम्प्रेशन था? I do remember you were wearing like olive green shirt, I think. Yeah, it was good. For me, the impression was good. एज ए बॉस आपको क्या लग रहा था? As a boss, I think it's अच्छा आदमी है. Okay, and how about you, Aditi? I remember we had gone for the first shopping meet. Yeah. And I understood this client is chill. He's open to, receiving new things. And that's what mattered. You were wearing these typical Birkins, your linen bands and shirt. And I understood that there's no restrictive personality with him. But he's okay to understand new things, carry on an idea of what he can wear starting today. So yeah, I think that's pretty much end of it. I'll not. So अभी आपने बताया ना कि he can wear everything. Actually, I have tried everything, है ना? क्योंकि और मेरे को लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज रिगार्डलेस ऑफ यू आर मैन और वुमन, आपको ट्राई भी करना चाहिए कि आपने एक बार ले लिया, है ना? उसके बाद वो पहनने के बाद आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो. और दूसरा सिनेरियो ये भी होता है कि आप छोड़ो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, यू आर कंफर्टेबल ना. These pants that I am wearing, right, for the first time you suggested me, and मैं इन्हें 1 महीना हो गया है, शायद मैंने दूसरी जीन्स नहीं करनी होगी, राइट? सो कई बार ऐसा होता है कि यू जस्ट नीड समवन टू शो यू द पाथ, कि ये भी ट्राई कर लेना एक बार, कभी किया नहीं है ना? तो इनसे मैं बच रहा था. तो It actually reminds me of our very first conversation where we were talking about what you already have. And you said that Aditi jeans to nahi. ट्रू It is हो पाएंगे. And I was like, Siddharth,
एक जीन्स तो करनी पड़ेगी. And I'm so glad that your idea or perspective about wearing jeans has totally changed. True. So it is coming down to the fact of the fit, Right. understanding. ये अच्छा मेरे लिए अगर ये काम नहीं कर रहा तो मैं ये Ideal, हाँ. which is great. सो अंडरस्टैंडिंग द फिट कंफर्ट दोनों ही मैटर करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है ना, बट मैं कंफर्टेबल हूँ यार पहनने में. कई बार मेरा शॉपिंग पैटर्न ऐसा हो गया है कि अगर मेरे को ब्लैक कलर खरीदना है, राइट, एंड ब्लैक कलर मेरे साइज में अवेलेबल नहीं है, सो आई बाय द वाइट. क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल भी तो देखना है ना, बारी में बुरा क्या लगेगा, एक पीस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, हम बाली में पहन लेंगे भाई, You and your travel conversations are endless. राइट. सो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो, बट मेरा नैरेटिव थोड़ा सा यही रहता है कि आप अगर ऐसे फील्ड मतलब फील्ड वाइज भी थोड़ी सी शॉपिंग होनी चाहिए, या जो आप काम करते हैं आप कॉर्पोरेट के अंदर हो तो यू वुड बी गोइंग फॉर मोर काइंड ऑफ सेमी फॉर्मल्स और फॉर्मल थिंग्स, राइट. सो उसके लिए क्या सजेस्ट, अभी तक हम सारी जितनी बातें कर रहे थे आपने जो लास्ट की हैं वो सारी विमेन ओरिएंटेड थी, है ना, कि वो जो भी टाइप का टॉप होता है और वो सारी चीजें. But we are the worst dressed, मुझे लगता है. हाँ, सो क्या मेल कैटेगरी के अंदर जो वर्स्ट चीज आपने देखी है अभी तक वो क्या है? कलर कॉम्बिनेशंस है, फिट है, या ओकेजनली जो पहनना चाहिए था वो नहीं पहना है, सो वो क्या क्या? That's honestly a very good question. राइट. One, for sure fit. They have not grabbed the right fit. Second, अगर उनको एक चीज समझ आ गई वो 6 साल वही पहने. हाँ. This is Yes, that- one thing. Like I know this one client. When I met him for the first time, he had 15 polo t-shirts in the same color. He said, मैं इतने अच्छे लगता हूँ, मैं रोज ही पहनता हूँ. There's nothing wrong in it. I'll tell you one thing. There was a time when I was having almost 30 white t-shirts and I was obsessed with them. Blue denim and white t-shirt around neck. But this was all because एक बार शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा. So उसके अंदर he said my wife would be laughing at it. So he said कि मेरी पूरी wardrobe के अंदर सिर्फ 2 कलर है, blue and white. So either I wear white shirt or I wear white t-shirt. Right. सो मैंने आई स्वेयर टू गॉड, मेरे को आज भी याद है कि मैं गया था और मैंने अलग अलग जगहों से उठाई, जहाँ पे मेरे को वाइट टी शर्ट दिखी मैंने वो वाइट टी शर्ट उठाई, और वो कलेक्शन उस कलेक्शन में से मेरे पास आज भी टी शर्ट्स हैं. सो ये मैन साइकोलॉजी है शायद, है ना, कि एक बंदा है. सो उसके अंदर ऐसा होता है कि मैं आपको बता पर्टिकुलर वर्ड नहीं है मेरे पास, बट हाँ ये कि हम इसके अंदर कंफर्टेबल हो गए हैं, अब हमें ज़रूरत नहीं है, है ना. जैसे अब उस हाँ बस ऐसा ही है ये, उसके अंदर फिर क्या कर सकते हैं? Like we spoke about it earlier, get out of your comfort zone. ओके. That's it. If that's your aim, like I know founders who wear the same t-shirt, same jeans, but they have the same jeans in 2-3 pieces. So there's nothing harm in it. There's nothing to be ashamed about it. But if it is on your list that you want to look better, be perceived better, or have your own personal style, it is always good to, build your wardrobe items around it. So let's say in the same situation, SRK said white and blue. You could have got blue shirt and white pants also. It would have just changed it would have made it your look. You got inspired from something, you did not copy it. You got it in other way around. कि आपने let's say एक chambray shirt or t-shirt पहनी है, or with what you're wearing right now, like this over layer with the white linen pants, right? So it's about how you manipulate a certain inspiration, राइट. which I think is the idea. Because copying something is not going to take you to the long road or to the end of the tunnel. क्योंकि वो बदलेंगे, आप बदल पाओगे या नहीं बदल पाओगे. Exactly. They have stylists on board to work through them. It's not like SRK never wore anything else. Correct. Right? So the idea is कि अगर हम किस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं, हम उसको अपने तरीके से कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेट करें, तो you're going to feel the burnout situation कि oh shit, this is not working, I'm bored of it. एंड आपने क्या देखा है सबसे वर्स्ट? मैंने सबसे worst, मैंने येलो पैंट्स देखी थी रेड शर्ट के साथ. वाओ. बट आई थिंक वो किसी और कोई और पहनना तो और बॉडी टाइप का तो आई थिंक बेटर लगती है, बट वो मेरे बट ये तो किसी भी बॉडी टाइप पर अच्छी नहीं लगी भाई कि शायद ये प्रेस so
हाँ रणवीर सिंह could suit it. मतलब रणवीर सिंह के ऊपर आई थिंक I can't say that we say wearing something like that. Not bad, but something like that. personality comes down to that. He is that fun person. He's always, played such roles on the screen. Even if you like, totally reminds me of Rocky and Rani. It was very something like that. It would have totally suited him. अब आप उससे इंस्पायर होकर या तो सेम चीज पहन लो, या फिर आप बोलोगे कि ठीक है ये थोड़ा मेरे लिए ज्यादा है, मैं इसको सटल डाउन करके ये करता हूँ कि अगर मैं सिर्फ व्हाइट पहन रहा हूँ, मैं रेड शर्ट पहनी हुआ उसे ले, right? So it is about getting inspired. If I talk about red and yellow, it can be combined in a different way, more subtle way, which doesn't, attacks you in the head that, oh shit, this person is coming, right? पर 99.99% लोगों के ऊपर वो नहीं It has nothing to do with body type, I'll be honest. But no, I will not. I'll not. He with the electron that it will not say the light. Stylist in talent. That era was cargo pants of yellow. So maybe it depends which shade of yellow, right? मतलब it totally depends on that. आशा अब maybe आप red का burgundy पहन रहे हो, yellow आप you might be imagining a tomato red with a sunbright yellow, if I'm not wrong. See, that's yeah. I can give it to a college girl or someone who is walking into a runway show, like my Lori line skirt with a red t-shirt. right. You are But on the I think mustard of yellow and maroon of red. burgundy. Burgundy. Burgundy is a The shirt red that we yeah. So burgundy is so even a deeper tone, like a burgundy red is a neutral. Yellow में आप उसको बेस से manipulate थोड़ा कर सकते हो. Again, and then you have to some way turn it around in your favor, and don't get. We all will imagine the same color, sun bright yellow, tomato red. That's where we kind of. so जैसे हर चीज के लिए लोग अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, हम काम करते हैं, सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री वी कीप एन अपडेट अबाउट इट, Right. बट वी डू नॉट कीप एन अपडेट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन फैशन इंडस्ट्री, और वो ट्रेंड्स को अपडेटेड रखने के लिए खुद के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे Updated रखना ही क्यों है? मैं मतलब I feel like there's a lot of accessibility with the amount of digital creators we have in today's day and time, influencers, even like a founder is doing something on Instagram, जिससे आप inspire हो सकते हो. So just be up to date with what is serving you. Trends will come, trends will go. You have to, again, I'll repeat the same thing. Can you sit, eat, and sleep in it? Which you can't. So even if you're watching someone else, if you're watching a celebrity wearing it, you can't wear it another line. Yeah. So maybe a blouse that Alia Bhatt or Deepika Padukone is carrying, if it doesn't suit your body type or your lifestyle, you're not going to repeat it. You might like get it staged, wear it one time, do an occasion, but second time you'll hesitate. That, oh, this is a little too much. Or let's say, this is not my comfort zone. It can be anything, but it will not take you to a long run. कोई सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्लाइंट एक्सपीरियंस आपका जो रहा हो अभी तक? मतलब क्लाइंट अच्छा ना हो, And to add this question, I go manipulator. Because styling is something like manipulation also. So we do kind of read through what the client usually wears, right? So when I met Siddharth, he talked a lot about harem pants. He talked a lot about comfort. So, and he also talked about the fact that he hates jeans. So I have to blend two of them together. So I did not manipulate him to wear jeans, but I understood that he wants comfortable jeans. If I answered my question. Your question. so what happened was कि I was gaining weight. I am gaining weight actually from last 1.5 year. So jeans की फिटिंग थाइस के ऊपर ना सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है किसी के लिए भी. मेरे लिए तो है एक्चुअली, अगर सबके लिए नहीं तो. और यूजुअली आई वेयर खुले खुले कपड़े, और जीन्स भी मैं एक साइज बड़ी लेता हूँ हमेशा. सो वो खत्म हो गया था और मेरे को लगा यार अब खरीदूंगा दोबारा फिर वही हो जाएगा, पता नहीं लूज होगा नहीं होगा. सो आई स्टॉप वेयरिंग इट. सो ये वाली जो जीन्स आई, ये ऊपर से लेके नीचे तक ये कम्प्लीटली एरी है, ठीक है. सो मेरे को वो
शीज राइट कि आपने उसको ब्लेंड कर दिया, है ना, कि मेरे को जो चाहिए मेरे को वो भी मिल गया, जीन्स की लुक आ गई और better styling. So yes, it makes sense. Yeah, I think it's not more on the manipulation, it's just building an understanding Correct. कि this is what client is struggling with and this is what they aspire to have. As long as you are getting a comfortable jeans, आपको साइज बड़ा नहीं चाहिए, आपको साइज अपना ही चाहिए, पर वो कंफर्ट चाहिए, वो अलाइनमेंट चाहिए कि अच्छा मैं पहन भी रहा हूँ तो मुझे वो हैरम लुक भी ना करे. Correct. So that's the idea. But you're telling things right. Yeah. I think someone who doesn't want to change. Okay. They come with the idea कि मैं ये पहनता हूँ या पहनती हूँ, मेरा ये बजट है, ना तो हम अपना बजट बढ़ा सकते हैं, ना ही हम अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं. And that's where I use as a stylist. I am like, if I can't bring you out of your comfort zone, that's the most challenging thing for me. Right. If you are already wearing a lot of prints and you want to look classic, I will add some solids. Positive. Yeah. I will add it. And the moment I give you a solid, you're like, this is too boring for me. Or let's say this is this is not worth buying via a stylist. So it's a very judgmental situation. They are looking to buy something which is going to elevate their style. But somewhere they are also not clear in their head. Right. कि उनको अपना personal style कहाँ manipulate करना है, क्या change करना है, या तो they don't have a name. If you have a name, then please be open to changing. Right? So I have learned a lot of things from my clients also. It's not like I'm a closed chamber, right? I have been introduced to very good makeup brands, very good new brands, but because I am on the receptive end. So as long as the client is receiving, I'm fine with it. But the moment the client is like, oh, I can't change, oh, this doesn't match my budget, I'm not going to splurge onto shopping, but you have to somewhere get out the comfort. बट कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि आपके वार्डरोब में बहुत सारी चीजें होती है ना, बट एक्चुअली कैन नॉट पेयर इट विद द काइंड ऑफ क्लॉथ, वो पेयर नहीं हो पाता है ना. जैसे मेरा सिनेरियो भी था कि मेरे पास था सब कुछ बट आई वाज नॉट वेयरिंग द राइट कॉम्बिनेशन, राइट. Right. तो वो करेक्ट करने के लिए यू हाउ वो कैसे हो सकता है कि मतलब आप क्या करना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग वार्डरोब के अंदर ही आप करेक्ट कॉम्बिनेशन या अच्छा कॉम्बिनेशन बना पाए, क्योंकि वो कलर्स के बारे में जो है ना कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, आई थिंक दैट ऑल्सो मेक्स योर लाइफ लॉट इजियर इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग योरसेल्फ, राइट. Right. I think two things here. One, be okay with understanding basic wardrobe neutrals. कि अगर मेरे पास ये बॉटम्स हैं, ये काफ़ी वर्सेटाइल हैं, इसके साथ ना कोई भी कलर मैच कर दूँ, मैक्सिमम जितने मेरे पास हैं, it is going to work in my favor. राइट. Right? Second, with anybody, even if you're not shopping, even if you don't hire a stylist, even if you're not a stylist, please first analyze what you have. Okay. You can go and shop any day. You can fill in your wardrobe and still have nothing to wear. So first understand and analyze what you have. If you don't make space for you pieces and you keep just buying things, आप आज survive कर लोगे, कल कर लोगे, the day after you're gonna still feel stuck. Right. So first analyze what you have. Do not fill your wardrobe. Keep it to the point. Something you can organize, something you can see. कुछ भी आपकी आई विजिबिलिटी के पीछे नहीं जाना चाहिए. अगर जा रहा है तो आपने चीजें एक्स्ट्रा लेनी स्टार्ट कर दी है. टिप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द वार्डरोब. A lot of things, a lot of points here, but if I come down to few, one, everything should be visible to your eye. If you don't have a space to hang everything, file fold them. Keep it in a drawer. Try to coordinate them color wise. If you don't know how to do that, at least light to dark कर लो. ओके. कि ठीक है समर्स है, मुझे ज़्यादा डार्क नहीं पहनना है, लाइट पहनना है तो मैं ये पहन सकता हूँ, राइट. कलर कोऑर्डिनेशन, विजिबल टू आई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर आपको कोई चीज़ विजिबल नहीं है, आपको तब याद आएगी जब आपको शिफ्ट कर रहे हो या वार्डरोब खाली कर रहे हो, देन यू लाइक ओह शिट आई हैव दिस. तो कपड़े गुम नहीं हो जाता है. क्यों होते हैं? because you hide them. You end up hiding them with something else. All right. So, what's your go-to advice for being versatile in terms of fashion and what can you do for a timeless wardrobe? Classics. I think you would have heard the line a lot of times
build your classic wardrobe. Right. Have more solids. The more solids you have, the more mix and match you can do. I can wear this dress already in 3 to 4 days. Okay. Right? So it totally depends what piece you're buying. If it is solid, आप उसको अलग prints के साथ underlayer कर सकते हो. But if you're already buying Goa worthy printed clothes, you cannot wear it in a lot of. Right. आप maximum उसको एक और बार style. But that's the only reason कि मैं लिनन सबसे ज्यादा खरीदता हूँ, है ना? उसका पर्टिकुलर रीजन है, that comes in solid, right? 90% solid में आता है. उसके साथ में आई बाय लिनन पैंट, सो मेरा मैच कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है. आई डोंट गो टू मीटिंग्स मच, सो मेरा अगर मेरे को जाना ही है तो इट लुक्स लाइक सेमी कैजुअल वाला फील इस टाइम पे. सो हाउ डू यू थिंक चॉइस ऑफ लिनन for the entire year is going to be for everyone? You can't wear linens mostly in, like, if I talk about Delhi, like November, December or January also, you can't wear linens. But otherwise, if you're buying linens and you know that you will have to sit and stand also, तो जो creasing linen होता है बहुत पतला, don't take that. Take something which is good quality, slightly more thick linen, which doesn't irritate you for the fact that it's going to crease out. So that's one. And second, I remember that you used to only pair like linen with linen. Yeah. But now you also layer linen. Right. So that's how you kind of mix and match. Right. That's the power of doing it. And how do you take care of your wardrobe? You or Anshuman takes care of it. Do husbands do that? Yeah, I do. Do they? I'm doing it, bro. Why don't you tell them? Yeah, I was so proud of how you did your decluttering session. Yeah. Wherein he had like all these piles. I was like, very impressive. He has all. Yeah. मेरा तो अभी भी ऐसे ही खोलो तो इससे तो what happens is कि मेरा जब declutter का टाइम आता है, वो आता है मतलब 6-7 महीने में एक बार आता है, और उसके अंदर मैं वो कपड़े निकाल के बाहर रख देता हूँ और वो कपड़े रखे ही रहते हैं. सो कई बार ऐसा होता है कि मैंने कपड़े जैसे धुलने के लिए डाले तो वो इकट्ठे हुए 2-3 हफ्ते की इकट्ठ लगाता है. सो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा डर लगता है कि मैं कैसे लगाऊंगा. सो वहां पे आज तक हम सिंटू पिक्चर एंड शी हेल्प्स मी आउट. अदरवाइज ये मेरा निजी काम है कि मैं मशीन लगाई, कपड़े धोए, प्रेस करने के लिए दे दिए, घर आया, अरमानी में रख दिया, दैट्स फाइन. सो वो वाला काम तो मेरा रेगुलर है. बट हाँ, डीक्लटरिंग मेरे को थोड़ी सी लगता है कि वार्डरोब मैनेज करना मेरे को बहुत पसंद है, बीट एनीवन. बट अब थोड़ा सा टाइम का क्रेंच है तो उस वजह से रह जाती है. बट तो मुझे करंट है बट वो हो नहीं पा रहा है, समथिंग की टाइम नहीं मिल रहा है और फिर वो हो नहीं पा रहा है. और ऊपर से मैंने अपनी जिंदगी में इतने प्रेम्स खरीदी हैं कि वो कुछ मैच ही नहीं करता है. अब लगता है कि यार ये तो फालतू में, ये तो वन टाइम था, बस हो गया, एक ही बार पहनना था मुझे तो इसे. अच्छा. और फिर अदिति, आपका जो हाउ डू यू बैलेंस दी फैशन ट्रेंड्स जो आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हो, बॉडी टाइप और कलर कॉम्बिनेशन. सो आपका पहला प्रेफरेंस क्या रहता है कि आप जब किसी के लिए शॉपिंग सजेस्ट करते हो कि आप ये पहनना स्टार्ट करो? सो आई ऑल्सो विल ब्रिंग आउट वन मोर थिंग टू दिस, द tone of your skin, right? That's also very important while shopping. So उसके लिए आपकी क्या सजेशन है? One thing is that do not restrict yourselves with color. I know color analysis, color theory is trending really, Right. like going viral right now. Uh-huh. Don't restrict yourselves. Be open to the idea that you have certain undertone, right? So if I talk about myself, I have a very warm undertone. So if I wear like the, clean political white, which is like very cool, it will not suit me. But the moment I wear something which is like a beige or even like a, what do we call it? Off-white. Okay. It is going to suit me. I'm repeating my personal colors. Okay. So whenever you're buying something, either it is belonging to the person color family, in which usually your eyes, your hair, eyebrow, or if you have beard, all those colors come to your head. But do not restrict yourselves. Of course, if you are an Indian skin tone, neon is not going to look good on you. So just be aware of that fact. She does nailed me. So again, but it is your personality. It's not, you do wear it, right? So do not restrict yourself. So like occasionally, let's say you're traveling, you say it's
He used to wear it, but फिर शादी हो गई. exactly. So what happens is कि मैं कुछ भी खरीद नियॉन का जब भी मैं कुछ खरीद मेरे को बहुत पसंद है बाय नियॉन मेरे को नियॉन से बाय जस्ट लव इट बट आई एंड नॉट बाय राइट I'm so glad you can't buy him. तो जैसे ही मैं पहन के इसको फोटो भेजता हूँ या कुछ भी करते हैं तो वो फोटो ना हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स के ग्रुप्स हैं उसके अंदर सर्कुलेट होती है इसे रोको इसे रोको इसे Actually, that brings me to a point. When you are wearing something, is it the cloth is wearing you or you are wearing it? या तो अगर आप नियॉन पहन रहे हो आप दब जाओगे सिर्फ वो कपड़ा देखेगा I like the concept. राइट सो यू हैव टू सी दैट कि या तो आप उसने आप हाईलाइट कर रहे हो ये बोली गाइस आजा. सो या तो यू आर द हैंगर इन इट और द अदर वे अराउंड एंड इफ द क्लॉथ इज गेटिंग हाईलाइटेड द पर्पस इज डिफीटेड ओके you have to make sure you are the center face, right? At least I believe so. that makes sense right कि अगर someone else may say to वो बस yeah इससे हाँ मतलब ऐसा तो था कि दर्द तो लगी थी like I just open any picture and you will see that if you're wearing something too neon it is going to get highlighted and आपका face दब जाएगा despite of whatever accessory you might be wearing on your face. एक्सेसरी से एक और चीज है एक ऐसी एक्सेसरी जो इंस्टेंटली एलिवेट्स योर लुक मेन एंड वुमेन दोनों पाला गया If I talk about women, accessories in general are very important, like watch, bracelets, a bag. But they also have an advantage of playing with makeup, the color of its shade, doing something with eyes. But if I talk about men, in my experience, ओके glasses and watch. I think they that in a pairing with that is working for me yeah. So glasses can really like change Yeah. again of how you're looking. all right so how social media has changed the entire narrative towards fashion so वो थोड़ा सा हाईलाइट करो आप and the way people perceive and use fashion आज के टाइम में कैसा होगा I think social media has made fashion very aspirational and accessible. It does come down to the audience that are you actually getting inspired or you're copying something. Okay. You have to go through with the fact this person can wear it to this occasion because they are carrying out within the similar circle, or is it there because they're promoting a certain product, or because they have some kind of body type which is suiting them. A lot of time when you buy the same product, you end up getting disappointed. Shit, I got wrong influence, right? But it's not that. They were influencing you to tap onto that brand. अब आप उस ब्रांड से अपने बॉडी टाइप और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है. Like if I give you a basic example of waistcoats, right? They're really trending right now. But if you don't wear cut sleeves, if you already don't like power clothing or power dressing, तो आप waistcoat नहीं पहनोगे. आप बोलोगे why am I wearing this sport? Right? अब उसमें भी आपको बहुत वेरिएशंस मिलेंगे with the material. लिनन भी आएगा, knit भी आएगा. So that's when the tapping or exploring different things comes into the area. कि अच्छा मुझे ये अच्छा लगा. Are you taking enough time to analyze it? कि मुझे इस चीज के बारे में क्या अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा और मैं इसे ऐसे नहीं पहन सकता या पहन सकती तो मैं कैसे इसको कैरी करूंगा. मैं क्या इसको एज अ लेयर यूज करूंगा, इफ नॉट मेनली ऑफिस, इज इट समवेयर एल्स दैट आई हैव टू गो टू दैट आई विल कैरी इट. एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अनदर थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट decluttering. If you have something already or if you're buying something, can you style it with 3 pieces in your existing wardrobe? so this is how you should buy Yeah. so this is a shopping tip A basic formula. Can you pair it with 3 different things? If you can only wear it with one item in your wardrobe, there are possibilities that you might wear it 5-6 times, and you might not want to repeat that outfit, right and you'll be burned out. so that's a shopping tip for you guys Yeah. Shopping, decluttering, it applies both ways. nice so अब कुछ टाइम पहले एक ये भी ट्रेंड में चला था ना कि आपको you just need 5 pants 5 shirts and So it was not a trend.
So it's actually a combination that you can compile और आपके approximately 100 plus combination बन जाते हैं उससे suits के. Suits का है वो. Then you need one black, one brown, one blue, one beige and one navy I guess. So उसके one light blue. Light blue. So उसके combination से उन्होंने 155 So it might actually talk about this also. Let's say you saw this trend, you bought all the suits. आपने उसका नोट भी कर लिया कि मुझे ये बेयरिंग करनी है. But will you mix and match different colors? that's already the mindset. See, that's what you need to analyze before making a purchase. कि अच्छा ये trend, and it was not something trendy. This is something which is very classic. Very classic. But will you wear different suit ka coat or a blazer with a different suit ka pant? If not, Don't buy it. बट ये मेरे को लगता है ये सिर्फ इंडियन माइंडसेट के हिसाब से भी है. मतलब जो हम शॉप करते हैं, आई सी पीपल इन इंडिया डोंट मिक्स एंड मैचिंग विद सूट्स बिकॉज दे वांट कि आज मैंने ब्लैक सूट लिया तो मैं ब्लैक ही पहनूंगा. आई विल नॉट बी यूजिंग नेवी पैंट विद वाइट शर्ट और वाइट की जो वो है मतलब उसके ऊपर का जो वेस्ट कोट है या कोट है वो कंबाइन नहीं करते हैं. बट आई सी लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड इंडिया mix and matching the different suits kind of thing. So ऐसा ये सिर्फ इंडिया का ही mindset है या you have seen people in India as well who mix and match those things? one, the perspective is changing for sure. It's taking its own time, but it's changing. Second, ऐसा नहीं है. Even foreigners, or if I talk about like countries we get inspired from, US, UK, वहाँ भी लोग हैं जो struggle कर रहे हैं. So there's not a specific notion that, oh, Indians are not doing this. No, not at all. There are other people also who are still struggling because one, they might not have the time to tap into it. Right. Or they don't have the investment right now to make it to it. So they are maybe, building the idea of what to wear, what not to wear. So I know that I like for me, if I talk about myself, I used to buy from Sarojini. I had bought 3-4 lines back in college days and I still regret it. I cannot visit Sarojini Nagar. One, you are just buying something because it is at lower cost. Right. Can you try it? You can't try it. You might go back home, realize it's defected or it's not fitting. You might watch a lot of Sarojini halls and end up going there. Right. It's about intentional shopping. It comes down to intentional shopping. Right. Even if you can't mix and match. अगर आपका intention ही नहीं है कि मुझे इससे multiple looks बनानी है, तो वो सूट पड़े रहेगा. Like I know someone who has a black and beige suit, men. They got it for a reception. And I asked them that you can wear this in a meeting also. Just wear this pant with a formal shirt. They're like, no, this was for reception. So you reserve that specific item to an occasion. It's the same formal material. Right. But if you categorize it or you keep it specific to one occasion, it's not going to get utilized. Wow. Okay, and how about you? I like what? I was so much lost in the ये जो combination हम okay बनाते हैं the combination. मैं खुद नहीं बना पाती हूँ तो मैं ऐसे मुझे लगता है बट हाँ आई कैन डू सम पेपर ऑन इट दैट मुझे लगता है कि हाँ कॉम्बिनेशन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि बना लेना चाहिए क्योंकि क्या इतने क्या पूरा हर सा ऑर्डर ऑफ प्रिंटेड और ऐसे पफ प्लीज और ऐसा क्योंकि आई थिंक द आइडिया इन इंडिया जो वो फैशन का कॉन्सेप्ट है वो सूट करने वाला नहीं है मतलब टिल अब चूंकि इमर्ज हो रहा है और चेंज हो रहे हैं थिंग्स आर रिवॉल्विंग बट जो था फैशन का कॉन्सेप्ट था कि वी विल समथिंग तड़कता भड़कता सो दैट सबकी आई कैच हो गए सीधे आप पे चले जाए है ना ये वाला अब जैसे हम स्कूल्स में जब फैशन शोज होते थे तो हमें टीचर कुछ ऐसा ड्रेस कर रही है ये सब देख रहे हैं हमें भाई ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है उन्होंने है ना तो वो उनको अब कुछ फैशन का कॉन्सेप्ट ही हमारे लिए है कि कुछ ऐसा पहना दो बच्चे को कि सब देखें है ना अब चूंकि चेंज हो रहा है भाई ऐसा नहीं होता कि उसको रेड कलर पहना दिया और पूरा कुछ उसने पहन दिया है अजीब सा और आप उसे फैशन क्या दे रहे हो ये नहीं है डेफिनेशन ऑफ फैशन So दीदी आपके लिए any public figure in present or in past that you would always like to serve? Very good question. I think rather than styling, I would rather want to pick things from them. Okay. Like,
There are so many actually. सबके नाम बता दो आप सबका दानी है कि कोई बात I also get inspired from like today's day and age celebrity. Like I love how even Alia Bhatt is working with her stylist, or if I talk about even Deepika Padukone वाह or Anushka Sharma. Oh God, I love her style. It's so comfortable. guys You get inspired in a way that okay, she's also looking chill and all with basic, shirt and jeans. Yeah, but maybe someone like Madhubala, I would like to mix and match that era with today and see how she would do it. Something of that sort. But I'm not too big on, working with celebrity or someone who has the accessibility of it. I would rather want to work with someone on an everyday basis जिसको मैं वो feel कराऊँ how style can really really change your life and make you feel confident. Because I have seen men and women both change their perspective about themselves with how they dress on an everyday basis. अभी लास्ट हम जब बात कर रहे थे तो आपने एक मेरे को बात बताई अभी आपने बोला था कि एक एस्पिरेशनल फैशन होता है Yeah. वो क्या होता है वो आप मतलब इज इट कनेक्टेड टू ब्रांड्स ओनली राइट कि मेरे को आई एस्पायर टू वियर दैट पर्टिकुलर ब्रांड राइट एंड इन दैट पर्टिकुलर ब्रांड आई लुक बेटर आई फील कॉन्फिडेंट फिर मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा आजकल अब जेंजीज जो शॉप कर रहे हैं एडियंस में अब जाते हैं या किसी भी वसंत कुंज वाले मॉल में जाते हैं तो आई सी लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ जेंजीज एंड हमारी एज ग्रुप के भी मिलेनियल्स में भी people are doing aspirational shopping brand shopping उसका क्या impact आप देखते हो कि they are doing it right or they are just buying it because they have money and they are still making mistakes about it Aspirational shopping can be subjective. Okay. It can also be from someone you really look up to. It could be because of other things they have in their life, their house, their, husband, life partner, anything you like about that person. कि यार इसके पास ये है, मुझे ऐसा दिखना है. right Right? Get inspired. Aspiration will make you buy things that will be very short-term brands. okay Right? Um, and even just now when we spoke about how we feel कि India में certain style, certain restriction, no. India has so many amazing homegrown brands. right We don't makes you explore with them. make you There are the audience would like to know. There's House of Fat, there's Ani Clothing, there is Shop Malmal, if I talk about Indian wear, okay there is True Browns. There are so many. and wonderful quality Selective. okay I can't say all of them have good quality. I myself have not worn most of their pieces, but I do own few of them because I am a very, very selective shop. If I have something, I wear it at least for 6-7 years. Like, I did not shop from 2019 to 2023 because I was not sure what to look like. I was in a question mode. Sustainability. I mean, I would also like buy things and return it. I'm not going to lie because मुझे लगता था यार नहीं पहन पाऊंगी ये मुझे नहीं पता. So that's exactly when I got into अब मेरे को लग रहा है Drawing. कि ओवर शॉपिंग करता हूँ yeah, boy is a big time, to shop or not to shop. I'm so proud of it that I stopped shopping the wrong pieces. right last and very important what do you prioritize with styling personality or body type Personality. For sure. Yeah. Body type is something I can easily slip my way into it. If I know your personality. So, like I slipped the right jeans for you. Correct. Honestly. I knew your personality. You want comfort. right If anything is not comfortable, you cannot convince it us. That's for sure. You cannot convince him. And it's not like you're someone who needs a lot of convincing. right But for me, if I've analyzed कि इसको comfort चाहिए, but if I knew someone इसको style चाहिए, इसको कुछ top notch चाहिए या कुछ he's bored, he has classics. Now he needs trendy pieces. वो मेरे लिए ठीक है हो जाएगा. But if I have an understanding, this is what the person wants to feel like, then I can give you anything. अगर मैं आपको आज एक लिनन शर्ट ला दूं जो आपको पसंद है बट वो चुभ रही है कंफर्टेबल नहीं यू नॉट वेयर इट यू माइट बाय इट राइट नाउ एंड यू फील कि नहीं
वन वॉश के बाद ठीक हो जाएगा. But if it's not serving you comfort, that is one of your aspirational world, Right. you will not wear it again. True. So it does come down to personal style. राइट. सो अब मैं थोड़ा सा स्किन टाइप, बॉडी टाइप, बॉल्डनेस, पार्शियल बॉल्ड पीपल, इनके अराउंड थोड़े से आपसे क्वेश्चन करूँगा. तो थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी को, मतलब मेरा मेन पर्सपेक्टिव इसका ये है कि आप अच्छा कैसे दिख सकते हो, आप अपना मजाक बनने से कैसे बचा सकते हो खुद को, क्योंकि देर आर टाइम्स व्हेन, अभी जितनी भी हमने बात की कि देर आर टाइम्स व्हेन यू माइट फील कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग दैट यू आर वेयरिंग, बट हो सकता है कि आप यू आर नॉट वेयरिंग इट एट द राइट इंस्टेंस. ये तो बहुत हो सकता है ना. और देर आर पीपल हु आर बॉल्ड, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है स्टाइलिंग, राइट. और I personally believe कि अगर there are stages when baldness hits your confidence, right? How styling can boost it, right? And you can still go with confidence and stand like any other person in the queue, right? So इनके around मैं आपसे थोड़े से question लूँगा in next 10 minutes. So first one is how a bold person or semi-bold can look better. What are the styling tips for them? One, if you're semi-bald, you can first explore ways of having extensions. Okay. There is no shame in it. If it really bothers, okay. And even if you're bald and you don't want to look in it in that way, you can always get like tapered extensions. Like people know about niche hair these days. They have a lot of these products. Right. Second, if you don't want to opt for these things, extensions and all, first accept. Right? True. Some people just keep doing every pekra here and there, to chalo solve karte hain. No. Acceptance is most important. Absolutely. Lowness is one thing which maybe I've seen men experience before women, Right. but women have it way longer than men have. They have their lower stomach that they're conscious about, their bust they're conscious about. Right. So it does come down to acceptance. Right. Have I accepted this thing fully? I have it, it's fine. And one, you have to accept, be it your hairline, your body variation, anything. If you have the acceptance of it, you will be okay. Second, when you talked about ki, people not feeling, or even if somebody is wearing something, just unka mazak ban sakta hai. Just look yourself in the mirror. Let's say if you want to not highlight your head, like remember how we spoke about don't wear an all black outfit. This which Right. right, blend it in. Right. Same goes with anything else. अगर आपको अपना एक body type, like body part or anything you want to hide, you end up highlighting it. बस वो ensure करो कि आप कुछ ऐसा ना पहनो कि उसी पे ही ध्यान जा रहे है, और अगर आपका जा रहा है तो व्यूअर का तो 100% जाएगा. So it's something which runs hand in hand. अगर आप अभी ऑल ब्लैक पहन लोगे एंड यू टेल मी कि इतनी मुझे मेरी बॉल्डनेस पे ध्यान नहीं देना, जाएगा. बट ऑब्वियस यू आल्सो हैव बियर्ड. अगर यू डोंट हैव बियर्ड, चलो मे बी योर फेस विल गेट हाइलाइटेड. Right. सो यू हैव टू बैलेंस समवेयर. Right. और जो सेमी बॉल्ड है उसके लिए आई फील कि जो सेमी बॉल्ड होते हैं वो थोड़े ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. मैंने बहुत ज़्यादा सुपर कॉन्फिडेंट इंसान देखा नहीं है शायद कभी, जो सेमी बोल्ड हो और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आए हो, और ड्रेसिंग के लिए भी उनको थोड़ा सा चैलेंज रहता है ना, कि तो वो चैलेंजेस कैसे थोड़ा कम हो सकता है उनके लिए, या कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बॉल्ड सेमी बॉल्ड लोगों के लिए ऐसा कुछ होता है? ऐसा स्पेसिफिकली कुछ नहीं होता. बट इफ आई टॉक अबाउट समवन हु इज जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ अ लॉट ऑफ हेयर लॉस, एंड उनको लग रहा है कि यार मैं तो ऐसे एजिंग वाली फील्स आ जाती, ड्रेस यंग. वेरी सिंपल, ड्रेस यंग एंड क्लासिक. डोंट एज योरसेल्फ विद व्हाट यू आर वेयरिंग. आई नो यू माइट बी स्ट्रगलिंग समवेयर कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है, बट इफ यू ऑल्सो स्टार्ट ड्रेसिंग लाइक एन ओल्ड पर्सन, कि अरे छोड़ो अब ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है. अगर मैं यहाँ, if I'm not doing my 100% in this spectrum, I'll also not do 100% in this.
then you lose the game. Right. अगर आप यहाँ पे अपना 100% नहीं दे पा रहे तो आप यहाँ 120 लो ना. आप यंग ड्रेसअप करो. एंड आई एम नॉट सेइंग कि प्रिंट्स एंड पैटर्न्स पहनने लग जाओ. बी सटल, बी क्लासिक, and do not hesitate with opting for ways like hair extensions or even the powder fillers that you can use these days. Yeah, why not? Just feel young as long as you can. Why not? Perfect. Yeah. So, यही conversation थी आज के हमारी. Like, how can people style themselves for better? Yes. Right. And इसको आज हम wrap up नहीं करेंगे. Thank you so much for watching, guys. I hope कि आपको और आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और अदिति और धनशिमा का जो सिनेरियोज थे या नैरेटिव्स थे या जो उन्होंने हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिए वो आपके लिए आपकी आगे की स्टाइलिंग जर्नी में हेल्पफुल रहेंगे. सो अगर आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द एल्गोरिथम एंड कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट या कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा पसंद आया. और अगर आपको कोई और स्टाइलिंग टिप्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं. आई होप वी वुड बी एबल टू गिव यू द आंसर्स फॉर दैट एज वेल एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू वेरी मच.